अस्सलाम वालेकुम। ये लेसन 35 है टोफल सीरीज़ फॉर द बिगनर्स का। आज हम इसमें वुड रादर के टॉपिक को कवर करेंगे इन डेप्थ ग्रामेटिकली कि आपने इसको सही से कैसे इस्तेमाल करना है अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट द लेसन। वुड रादर मीन्स द सेम एज प्रेफर, ओके, एक्सेप्ट दैट ग्रामेटिकली इट्स डिफरेंट। आपने अगर जुमले में वुड रादर इस्तेमाल करना है तो आप इसको इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं विद प्रेफर, बिकॉज बोथ मीन्स द सेम, बट देन यू हैव टू नो द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली, बिकॉज उसमें डिफरेंस है। वुड रादर मस्ट ऑलवेज बी फॉलोड बाय अ वर्ब, बट however prefer may have verb or may not have verb followed by it। जब आपके पास सेंटेंस में would rather वो मौजूद है तो आप इसके बाद हमेशा वर्ब लिखेंगे फॉर श्योर। आपके सेंटेंस में से वर्ब कभी ओमिट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने वर्ड प्रेफर मेंशन किया है अपने सेंटेंस में तो ऐसे में आपके पास सेंटेंस में वर्ब हो भी सकता है और वो वर्ब नहीं भी हो सकता। इन बोथ केसेस द सेंटेंस वुड डेफिनेटली मेक लॉट ऑफ सेंस। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, जॉन वुड रादर ड्रिंक कोका कोला, John would rather drink Coca-Cola than orange juice. So this is would rather followed by verb and then Coca-Cola then orange juice. अगर आप इसी सेंटेंस को टू एक्सप्लेन योर फीलिंग्स अगर आप प्रेफर यूज़ करें तो जॉन प्रेफर्स ड्रिंकिंग कोका कोला, दिस इज अगैन ड्रिंकिंग इज अ वर्ब, Coca-Cola to drinking orange juice. So again John की preference is more for drinking Coca-Cola than to drink orange juice। और इसी को सेंटेंस को अगर हम चाहें तो हम इसमें से verb omit कर सकते हैं and the sentence would look like John prefers Coca-Cola to orange juice because it's an obvious thing कि आपने की Coca-Cola भी आपने ड्रिंक करना है और आपने orange भी ड्रिंक करना है। so regardless आपने verb omit कर दिया and with the word prefer आपने verb omit करने के बाद भी you not only just make sense but grammatically this sentence is perfectly fine। however अगर आपने word would rather इस्तेमाल कर रहे हैं तो you should have to have a verb followed by this word would rather। इसके बारे में एक चीज़ और देख लें कि जब भी आप वुड रादर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो दैट ऑलवेज बी फॉलोड बाय द वर्ड देन इफ़ यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स। सिंपली अगर आपके पास सेंटेंस में वुड रादर इस्तेमाल हो रहा है इन ऑर्डर टू कंपेयर टू थिंग्स तो आप वुड रादर को हमेशा कंपनी करेंगे विद द वर्ड देन। हाउएवर अगर आप प्रेफर यूज़ कर रहे हैं इन द सेम सेंटेंस फॉर कंपेयरिंग टू थिंग्स तो आप हमेशा प्रेफर को कंपनी करेंगे विद द वर्ड टू। अब इसमें वर्ड देन नहीं आएगा। सो कंपेयरिंग द टू थिंग्स व्हेन यू यूजिंग द वर्ड प्रेफर यू विल यूज़ द वर्ड टू। हाउएवर वुड रादर के साथ हमेशा वर्ड देन इस्तेमाल होगा। सो दिस इज़ एन अगैन स्मॉल थिंग टू नोटिस बट यू शुड बी केयरफुल अबाउट कि एक तो आपके पास वुड रादर के बाद फॉर श्योर इट विल बी फॉलोड बाय द वर्ब, और अगर आप इसको कंपेयर करें दो चीज़ों को वुड रादर यूज़ करके तो आपने हमेशा वुड रादर को कंपनी करना है विद देन के साथ। अगैन अगर आप प्रेफर यूज़ कर रहे हैं तो प्रेफर के बाद वर्ब आ भी सकता है और वर्ब नहीं भी हो सकता। ग्रामेटिकली दैट्स फाइन, बट वेन एवर यू आर यूजिंग द वर्ड प्रेफर फॉर कंपेयरिंग टू थिंग्स इन योर सेंटेंस तो प्रेफर विल ऑलवेज बी कंपनीड बाय द वर्ड टू। सो जस्ट नोट दिस इन योर नोटबुक। There are different rules when it comes to would rather depending on the number of subjects you are having and the meaning of the sentence, right? For instance अगर आपके पास simple present tense है and you just have single subject in your sentence so it will be like subject followed by would rather followed by the verb in the simple form, nothing else। so it will be like John would rather go to class tomorrow than today। that's simple। he preferred to have his attend class tomorrow than today। that's it, no more, nothing else। it's just simple straight present tense where you have single subject in your sentence। however you can have multiple subjects in your sentence too जिसमें आपके पास present tense हो और आपके पास multiple subjects हो which are known as subjunctives। तो ऐसे में आपने वुड रादर का इस्तेमाल कैसे करना है अब हम उसको स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर को सब्जेक्ट फर्स्ट फॉलोड बाय वुड रादर दैट। अब तक हम वुड रादर स्टडी कर रहे थे। नाउ हियर यू हैव टू सब्जेक्ट्स टू कंपेयर or to study for that matter, so would rather that followed by second subject which will be followed by again verb in the simple form। this is present subjunctives। so the example will look like, first example, I would rather that you call me tomorrow। simple, I prefer you call me tomorrow rather mean I do it। second, we would rather that he take this train। so that's fine, you're not comfortable taking the train, you would like someone else to take the one, so that's fine। so just you have two subjects। ऐसे में would rather will not be just stay would rather, it will be would rather that again followed by a simple form of verb जब आपके पास present tense हो और आपके पास दो subjects हो। इसी तरीके से अभी तक अगर आपने प्रेजेंट टेंस में कॉन्ट्ररी टू फैक्ट बात करनी है, अगेन इसमें आपके पास दो सब्जेक्ट्स हैं लेकिन यू आर सेइंग समथिंग विच इज़
नॉट ट्रू। अभी तक जो बात हो रही थी दैट वाज अ स्ट्रेट स्टेटमेंट, प्रेफरेंस थी, कंपैरिजन था, दैट्स इट। लेकिन अगर आपने ऐसी स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है जो कि कॉन्ट्ररी टू रियल हो, which is also known as contrary to fact. So how to construct those structure sentence? So this will be first subject followed by would rather that. That will be followed by second subject and verb in the simple past tense. जब आप simple past tense को mention कर रहे हैं, because rest of the structure is same, so that means you are saying something which is contrary to what is on the ground. इसको example से समझते हैं. Henry would rather that his girlfriend worked, again simple past tense, in the same department as he does. So how to infer the contrary meanings? इसका मतलब है उसकी कि जो हेनरी की गर्लफ्रेंड है, she does not work in the same department. So it's just what you are saying, you don't mean it. What you say, you are saying lying. What you are saying is not true on the ground reality. So would rather that का मतलब with two subjects followed by verb in the simple past tense कि आप जो इस वक्त present की बात करें that is not true. ये contrary to fact है but in present tense. एक और example से इसको समझते हैं. Jane would rather that it were winter now. So it's actually not winter now. It's actually not winter now. अब हम जो बात कर रहे हैं इसमें हमने पहले बात कर ली कि प्रेजेंट टेंस में अगर कॉन्ट्री टू फैक्ट बात करें तो किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे. नाउ वील टॉक अबाउट कि अगर आप वुड रादर को इस्तेमाल करें हैविंग टू सब्जेक्ट्स एंड यू आर सेइंग समथिंग कॉन्ट्री टू फैक्ट बट द टाइम इज पास्ट. तो पास्ट टाइम कॉन्ट्री टू फैक्ट को हम कैसे मेंशन करेंगे, हम उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं. नो बिग डिफरेंस, इट्स जस्ट यू हैव फर्स्ट सब्जेक्ट followed by would rather that will be followed by second subject and then in case जब आपके पास एक contrary to fact बता रहे हैं regarding past तो आपने past perfect इस्तेमाल करना है. Remember जब आप present use कर रहे थे contrary to fact in your present tense तो आपके पास simple past tense था verb form, but you are saying something contrary to fact regarding past time तो आपके पास past perfect का verb form होगा. इसको हम examples explain करते हैं. Jim would rather that Jill had gone, this is past perfect, to class yesterday. So you are sure that Jill did not go to class yesterday. You are saying something contrary to fact, but it's not about present. It's about a day before, or a past day. So when you are saying something contrary to ground realities, which is lie, which is untrue, तो आप past perfect tense का verb इस्तेमाल करेंगे. How now you can notice कि हम अब तक जो भी explain कर रहे थे they were all affirmative sentences. What if you want to make negative of these sentences? So how each of the following sentences are made negative? When there is only one subject and when you have a present subjunctive means you have tense or just simply place the word not before your verb. You don't have to worry much. It's just कि आप पूरे sentence structure में verb से पहले, because we know would rather is always followed by the verb. So just to make those sentences negative, आप verb से पहले word not को add कर लेंगे and that will make the whole sentence negative. For example, John would rather that not go to class tomorrow. अगर हम इसमें से not omit कर दें तो John prefer to go to class tomorrow, but जब हमने not place कर दिया तो इसका मतलब है John does not prefer to go to class tomorrow. Second example, John would rather not have gone to class yesterday. Again, this is about him not going to class, but again regarding the past day. Bear in mind that this is not about the contrary to fact statement. We don't have would rather that statement. We don't have two subjects here, right? Third example, John would rather that you. This is now comes the contrary to fact statement. Would rather that you not call me tomorrow. So again to make the sentence negative आपने सिर्फ verb से पहले not को add करना है and the whole sentence will turn into a negative statement from affirmative sentence. Further इसके कुछ grammar rules को study करते हैं. For the present contrary to fact sentences use did not followed by the verb in the simple form. अभी तो हमने जो नेगेटिव स्टेटमेंट की बात की थी वो सिंपल आपका वो रादर के बाद आपने वर्ब से पहले नॉट लगा दिया एंड दैट विल ऑल मेक सेंस. मगर अगर आपके पास जैसे हमने पहले प्रेजेंट कॉन्ट्री टू फैक्ट स्टेटमेंट स्टडी किया था और पास्ट कॉन्ट्री टू फैक्ट स्टेटमेंट स्टडी किया था तो हाउ टू मेक दोज सेंटेंसेज नेगेटिव. तो उसके लिए जब आपके पास प्रेजेंट टेंस कॉन्ट्री टू फैक्ट सेंटेंस है तो उसमें आपने डिड नॉट को वर्ब यूज़ करना है followed by the verb in the simple form and that will convert your sentence into a negative format sentence. So for example, Henry would rather that his girlfriend did not work. This is did not followed by the simple form of verb in the same department as he does. Remember जब हम contrary to fact की statement की बात करें तो इसका मतलब हमेशा
उससे ऑपोजिट होता है व्हाट इज बीइंग सेड. सो इसका मतलब है कि ही डिड नॉट वर्क, इट मीन्स शी डज वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट. सो व्हाट यू हैव टू इन्फर इट्स जस्ट द ऑपोजिट फ्रॉम व्हाट्स बीइंग सेड इन द वुड रादर दैट स्टेटमेंट. एक चीज़ और क्लैरिटी के लिए आपको होनी चाहिए दिमाग में कि जब भी आपके पास डिड एक्सप्लेन है, डिड मीन्स इट्स अ सिंपल पास्ट टेंस. सो जब आपने डिड मेंशन कर दिया तो उसके बाद जो भी वर्ब होगा दैट विल ऑलवेज बी इन द सिंपल वर्ब सिंपल फॉर्म. इसमें आप आपका ईडी वाला या सेकेंड या पास्ट वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा, बिकॉज डिड इट सेल्फ शोज कि अच्छा डिड जो है दैट इज दिस इज समथिंग अबाउट पास्ट. तो डिड के बाद आप कभी भी वर्ब आपका जो वर्ब होगा दैट विल ऑलवेज बी अ सिंपल वर्ब फॉर्म. सो ये एक और क्लैरिटी होनी चाहिए. अनदर, जब आपके पास अपने सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है जो कि पास्ट कॉन्ट्ररी टू फैक्ट स्टेटमेंट है, जिसमें आपके पास आपको मौजूद है पता है कि फर्स्ट सब्जेक्ट फॉलोड बाय वुड रादर दैट फॉलोड बाय सेकंड सब्जेक्ट एंड देन वर्ब इन द पास्ट परफेक्ट फॉर्म. सो अगर आपने ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो इसमें आपने हैड नॉट यूज़ करना है, बिकॉज वी नो हैड वर्ड इज़ यूज्ड फॉर द परफेक्ट टेंस इन द पास्ट. सो जस्ट आपने हैड नॉट इस्तेमाल करना है और वर्ब अगेन इन द पास्ट पार्टिसिपल स्टेट में होगा इन द स्ट्रक्चर बिकम नेगेटिव. सो जॉन would rather that Jill had not gone to class yesterday. अब जो had not gone का क्लास का मतलब ये है कि it's something contrary to fact, तो इसका मतलब है they did go to class. अगेन ये पास्ट टेंस के बारे में है तो it's yesterday, और had not आपको रिफर कर रहा है रिगार्डिंग पास्ट डे contrary to fact स्टेटमेंट. इसको मजीद कुछ एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं. आई होप दिस ऑल विल मेक सेंस बाय नाउ. फर्स्ट एग्जाम्पल सेज जॉन वुड रादर स्टे होम टुनाइट. Right, it's just he prefers to have his tonight at home. The second example, we would rather that you call tonight. So it's just आपने preference दिया कि why won't you do that, ठीक है, it means they will not call you tonight. Myra would rather drink coffee than coke. Again जब हमने coke और coffee को compare किया है would rather के word के साथ, तो इसमें हमने word then इस्तेमाल किया है. If it was prefer तो हम इसको यूँ state करते कि Myra prefer coffee to coke. That's it. Prefer always go along with to, would rather always get along with then when you're comparing two objects. Example 4, Ricardo would rather not be here. Question 5. Example 5, Witzko would rather that we didn't leave now, but we must go to work. Again, it's a negative sentence made for the present contrary to fact statement. Did not, again did के बाद हमेशा verb की simple form होगी, and that's pretty much about it. The final examples, Roberto would rather that we had not left yesterday. So it means we did leave yesterday because it's a contrary to fact statement regarding past. So what is being said, what we must be, we will infer something exactly the opposite from what is being said. So it is said that they did not leave, though in reality they did leave, because would rather that always in that sentence structure means something contrary to what is being what happened. So this was all about would rather that would rather that. I hope this all makes sense. If it does, subscribe to my channel, like and share with your friends and family.